डायमेंशंस के कंसेप्ट को समझने के बाद बच्चों आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। अब ये प्रिंसिपल है क्या, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। आप बस ध्यान रखिए कि कोई भी फॉर्मूला जो होता है फिर इसके अंदर वो लेफ्ट और राइट से क्या होता है, बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस। उसमें जो भी टर्म्स होती हैं उन सभी टर्म्स की जो पावर्स होती है एमएलटी की वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम आर सेम इन ईच एंड एवरी टर्म। हर टर्म में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऑन आइदर साइड ऑफ द फिजिकल रिलेशन, जो भी फॉर्मूला होगा उसके किसी भी साइड हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लेट ए क्वेश्चन इज गिवन दैट चेक द फिजिकल रिलेशन by using dimensions concept where v equal to u plus at is given and v is given as final velocity and u is given as initial velocity and a is given acceleration and t equal to given as time. Okay, नाउ अब इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना होता। इस क्वेश्चन को अगर हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, या फॉर्मूला जो सही है या नहीं है, तो हमें करना ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड LHS में जो फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, जिस पैटर्न में दे रखी हैं, उसी पैटर्न में हम लिखते हैं पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। इन प्रीवियस वीडियो यू हैव लर्न अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज L1 t minus 1 because velocity has unit meter per second. Meter means length, second means time, and time is in the denominator, so power will be negative in the numerator. Okay, now take RHS right hand side. देखिए there are two terms, यहाँ पे टर्म कितनी है, two terms है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इसमें क्या आएगा L1 t minus 1 प्लस एक्सीलरेशन है a, द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर मीन्स लेंथ, सेकेंड स्क्वायर मीन्स टाइम, एंड टाइम की पावर 2, देन इन न्यूमरेटर पावर विल बी नेगेटिव एंड इनटू में टाइम t, then t1. Okay, now we can see that L1 t minus 1 plus this t1 is multiplied by the t minus 2, then power will be t minus 1. Now you can see that there are three terms in the given physical relation. Left hand side L1 t minus 1, in the RHS side the first term is L1 t minus 1, it is matching, and third is time and acceleration AT. This combination of physical quantities gives L1 t minus 1. So this equation is balanced by using dimensions. Okay, then तो देखिए ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला क्या है, बैलेंस हो गया, किससे, लेफ्ट और राइट से। ठीक है, वो चीज है। और भी देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 2, S equal to ut plus half at square. Now you have to check this given relation is right or wrong. Then dimensions of displacement, S is the displacement, is L1, then we write L1, it is the initial velocity, then we have its dimensions L1 t minus 1, and it is multiplied with the time, then we can multiply it with the t1. okay, plus and it is a half. आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी फॉर्मूले में जो कांस्टेंट्स वैल्यू होती हैं उनको हमेशा हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं,
इग्नोर, तो हाफ की कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। नाउ अब हम करते हैं फोकस किस पे, एक्सेलरेशन पे। तो क्या आएगा, L1 t माइनस 2 इंटू में क्या टी स्क्वायर, दैट इज टी की पावर 2। ओके, आगे बढ़े तो देखिए, इट इज L1 is T1 is multiplied with the T minus 1, that is L1, it is already L1 plus T2 and T minus 2 cancel out will be, and terms becomes L1. Then you can see in every term dimensions are matching. Okay, these are the examples of the principle of homogeneity. Okay, now in the examination, in the foundation examination, how many questions are based on this concept? Okay, now we will learn it. Okay, write down please this definition in your notebook with some examples, because we are going to solve the questions in the competitive exam like NEET and JEE. Okay guys, this concept is very useful in the checking of the formula. Okay, now question number 3rd, it is different question. Find out dimensions of a comma b in given relation, that is f equal to a plus root b into t. Okay, f equal to a plus root b into t. आंसर, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस इक्वेशन के अंदर ही क्या बोलना चाह रहा है कि हमें गिवन है फोर्स इक्वल टू एक्सीलरेशन प्लस रूट बी इंटू में टाइम। तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी आप हमेशा लाइफ में ध्यान रखिए कि हर इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है, ठीक है, उसकी हर टर्म की डायमेंशंस क्या होती है, मैचिंग करती है। तो देखिए, इट इज द फोर्स, द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स इज m1 L1 t minus 2. Okay, you have learned in the previous video, force is the ma. Okay, mass is the single power, acceleration has unit meter per second square, meter per second का square. Okay, then now we can see that force is the sum of two terms, first is a, then we write a. Okay, so then the dimensions of the a point will be m1 L1 t minus 2. A and b here are constant, here a is not acceleration, it is given as a constant in the equation. ठीक है, now it is a force and it will be the also force, because force is sum of two terms, then a must be force and root b into में का 2, it must be force. Okay, now root b into में t equal to force, and force has dimensions m1 L1 t minus 2, but we are going to find out the units of the dimensions of constant b. So b will be here, time t, it is the t1, and this right hand side will be remain same. Now t1 is cancelled out with this t, then the term becomes m1 L1 t minus, देखिए 1 तो माइनस का 3, t1 माइनस में 3. now root b and we want b, then we have to take square both side, then we take square both side so that this square root is removed, then we have expression like this. Okay, now square, then m2 L2 t minus 6, it is the dimension equation of the constant b. Okay, now you can do all the numericals like that, in which constants are given in any physical quantities and dimensions are to be asked. Okay, now next question. You can write these questions in your notebook by
pausing the video. Okay, question remains same. Okay, that is find out. Okay, I have to erase it. Now next question is like that energy E equal to x into में x into L upon में A and like that B. Okay, now the formula is given is E equal to XLB upon में A. Okay, and we are asked to find out the dimensions of the A comma B. Then we can write left hand side dimensions, which is m1 l1 t minus 2. In the previous video we have calculated the dimensions of the energy and work done, and dimensions of the energy and work done and torque are will be same. Okay, now x is the length or displacement, that is L1. Length is the meter, is in meter, then it will be also L1. B is find out, and A is the constant. Now L1 L2, this will be cancel out, then we can see that m1 t minus 2 equal to B upon A, and by concept of ratio we can write it like this, and 1 is written to be like m0 L0 T0. Then by property of ratio we can compare that dimensions of the B constant, it will be this, and the dimensions of the constant A will be this. Okay guys, so in this video we have learned about the principle of homogeneity of dimensions with some examples. Now in the next video we will discuss about the application of dimension concept. But first is to check the accuracy of any formula. To check the accuracy of any formula. Second is to derive any formula. If we have dependent and independent physical quantities. Second application is valid if we know about the dependent and independent physical quantities to a particular experiment or the process. Okay, now third is to convert the values from one system to other system. The example of this application like that, in the mathematics you have learned about 1 meter equal to 100 centimeter, and it is a part of SI system and it is a part of CGS system. In the similar way, in the physics subject, some units are defined in both SI system and CGS system, like force. The unit of force is 1 Newton in the SI system, and it is written as 10⁵ dyne in the CGS system. Okay, now the unit of energy is joule in the SI system, and it is written as 10⁷ erg in the CGS system. Then these relations are the examples of converting the values from the one system to other system. Okay guys, so see you in the next video.